आज वेंटिलेशन का फाइनल लेक्चर है और इस लेक्चर में हम जो रिमेनिंग चीजें हैं उन सारी चीजों को फटाफट जल्दी जल्दी से कंप्लीट करके इसको जो है तो समापन करेंगे। जहां तक बात रही इसके नोट्स की, तो नोट्स चूंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया वो थोड़ा लेंदी था, तो मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब कि आपका नोट्स टाइप से चीजें तो आप समझ ही रहे हो, हर एक चीज आपने देख ही ली है, तो नोट्स टाइप से मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हड़बड़ाइए नहीं, आज इवनिंग तक पूरा हो जाएगा कंप्लीट मेरा टाइपिंग का काम, तो मैं उसको जो है तो आपको शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, चलिए। So, hello and very good morning to everyone. Welcome to the Mining Gyan. So today we are going to study all the miscellaneous things which are left in the mine ventilation, like airborne dust, stopping, and some of the instruments used, which are used like resuscitating apparatuses, which is left, and some other topics which are important for you. Okay, like air crossing, regulators, all these things. Okay. So let's start our lecture. So some of the topics is left in our rescue and recovery section. That is topic that like Maxman resuscitator. Okay, the Maxman resuscitator. The Maxman resuscitator, basically it is used to blow oxygen. The apparatus blows oxygen, or if required oxygen and air both. It can blow oxygen and air both into the lungs of victim during inspiration phase. So basically this instrument is used to provide oxygen or inject the oxygen into the lungs of the victims, victim, into the lungs of the victim. Okay, when he is in inspiration phase. Okay, used air is sucked out of the or expelled by action of respiratory muscles. Okay, so it is similar to that of pulmonary device, that is it used to suck out the air also. Okay, so it just injects the oxygen or the air, or it and as well as it sucks the oxygen and air from the body of the victim. Okay, the apparatus has a capacity of 600 liters and its weight is 9 kg, and its functions are automatic. It automatically functions. Okay, and if air passage is not free, it gives indication also, because in a pulmonary device it is compulsory for us to continuously okay, Naresh, as I have promised, I will complete it, also complete that also. But today is the last lecture. After completing all the miscellaneous topics, we will see. We will look into it. Okay. Okay. So, if the like in pulmonary device, that in that we are not able to. It does not gives any type of indication of that the respiratory tracts are being blocked. Okay, the respiratory tracts are being blocked. We have to notice that thing. It gives indications by mistake, I think. Okay, like what kind of indications are given in the pulmonary device, that it will switch automatically in a very quick manner. Okay, but this device has some sort of function that it will give indication that if the air passage is not free or air passage is blocked. Okay, and now as you it is given that its size is weight and size is so big that only one apparatus can be carried by the rescue team. It can supply oxygen for about 30 minutes. This limits the distance up to which the apparatus can be used beyond the fresh air base. Okay, it can only be used for 30 minutes. That's why if you find suppose that if you find any person inside the irrespirable zone, and from where you have, from the location where you have found him,
and to the fresh air base. The time period for the traveling time period, if it is more than 30 minutes, then in that case it will be a limitation for you that within 30 minutes you have to reach. It is a limitation for you, within 30 minutes you have to reach the fresh air base. And if you think that you will take a two maximum resuscitator, then it will not be possible, because its weight and size will not allow you to take two or more resuscitators. Okay, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेसिस्टेटर में आपका क्या बोलता है कि ये आपका ऑक्सीजन भी और इसके साथ ही एयर भी जो है तो आपके लंग्स में, जो विक्टिम का लंग्स होता है उसके विक्टिम्स के लंग्स में इंजेक्ट करने का काम करता है। और जो एयर है जब या फिर जो ऑक्सीजन है जब वो यूज्ड अप हो जाती है बॉडी के द्वारा, तो उसको निकालने का भी, सकिंग का भी काम करता है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको बोलता है कि इसकी जो कैपेसिटी है 600 लीटर है और इसका वेट लगभग 9 केजी होता है। अब चूंकि इसकी कैपेसिटी और इसका वेट और इसका साइज इतना बड़ा होता है कि इसको एक रेस्क्यू टीम एक बार में एक ही ले जा पाती है। ठीक है, एक बार में एक ही ले जा पाती, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत इसमें यह है कि आपका ये ऑक्सीजन लगभग 30 मिनट तक ही सप्लाई कर सकता है। तो मान लीजिए अगर कोई आपको इरेस्पायरेबल जोन में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला, ऐसी लोकेशन पे मिला कि जहां से फ्रेश एयरबेस में आ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, 30 मिनट से ज्यादा का समय लग सकता है, तो उस केस में पहली दिक्कत तो भाई आप पेट्रोल लेके जा ही सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं ले जा पाओगे क्योंकि भारी है इतना और साइज भी बड़ा है। दूसरा दिक्कत ये कि अगर 30 मिनट से ज्यादा समय लग रहा होगा तो हम उस व्यक्ति को भी नहीं ला सकते हैं, है ना। मुझे मतलब 30 मिनट के भीतर भीतर फ्रेश एयरबेस में आना पड़ेगा, नहीं तो वो व्यक्ति नहीं पड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है तो आप काम आपका यहाँ पर ये वर्क करता है मैक्सिमम रेसिस्टेटर। सॉरी, now if we talk about the regulations of the rescue room, so what are the regulations which are given about the rescue room? First, it is given that in the rules and regulations, what is given about the rescue rooms? It is given that in rescue rooms shall be provided at the mine where more than 100 persons are ordinarily employed below ground. Okay, if there are more than 100 persons are working in and below ground mines, then in that case a rescue room has to be provided if there is no rescue station within 35-kilometer radius. Okay, it is for the construction of the rescue room, it is compulsory that there should not be any type of rescue station within 35-kilometer radius of the mines. And plus, second condition that has to be satisfied for setting for setting up of the rescue room is that it should there must be at least 100 mine workers वर्किंग इन द बिलो ग्राउंड माइन। ठीक है, अब रेस्क्यू रूम का आपका बात करें तो कब प्रोवाइड किया जाना चाहिए? जब भी बिलो ग्राउंड माइंस में 100 या उससे अधिक व्यक्ति माइंस में काम कर रहे हो तो उस केस में आप रेस्क्यू रूम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, दूसरा, पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए बिलो ग्राउंड माइंस के केस में। दूसरा आपका कंडीशन ये बोलता है कि आपका जो माइंस है उसके 35 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी प्रकार का आपका रेस्क्यू रूम स्टेशन नहीं होना चाहिए। नहीं है तो उस केस में आपको रेस्क्यू रूम जो है तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों कंडीशन एक साथ हो ये कंपलसरी नहीं है आपका, एक कंडीशन भी अगर है तो आपको करना पड़ेगा। जस्ट सपोज दैट कि आपके माइंस में 100 वर्कर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपके माइंस के 35 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी किसी प्रकार का रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने माइंस में रेस्क्यू रूम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, रेस्क्यू रूम जो है तो एक से अधिक माइंस को भी सर्व कर सकते हैं जो कि एक ही ऑनर को बिलोंग करता है। ठीक है, अब आपकी माइंस है, आपने बहुत सारी माइंस एक ही जगह पे खोल के रखी है। ठीक है, तो एक रेस्क्यू रूम से आप अपनी सारी माइंस को ऑपरेट कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एक रेस्क्यू रूम से सारी माइंस को आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, अगर वो सेम ओनर को बिलोंग करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो विद इन अ रेडियस ऑफ 35 किलोमीटर, मतलब सारी की सारी माइंस 35 किलोमीटर के भीतर भीतर है तो कर सकता है। ठीक है, इस केस में बोलता है कि आपका जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो 500 से 5000 से अधिक नहीं होने चाहिए। कितने से अधिक नहीं होने चाहिए? 5000 से अधिक वर्कर्स माइंस में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओके।
So a single rescue room can serve more than one mines. Okay, the mines which is belonging to the same owner, then a single rescue room can serve more than one mines. On the other hand, all these mines should be within a radius of 35 kilometers. Okay, with each other, and their and the number of workers employed in the mines shall not be more than 5,000. Then only a single rescue room can serve in this manner. ओके, रेस्क्यू रूम जो है तो आपका किस लिए बनाया जाता है? स्टोरेज, असेंबली, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ब्रीदिंग अपरेटस एंड अदर इक्विपमेंट। अब आपका रेस्क्यू रूम किस लिए बना है भाई साहब? रेस्क्यू रूम किस लिए बना है कि आपका जितना भी ब्रीदिंग इक्विपमेंट है, मतलब सांस ऊपर नीचे लेने वाला, रेसिस्टेटिंग अपरेटस, या फिर आपका जो है तो सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस, या फिर स्मोक हेलमेट, किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज का हो, आपका उस केस में इनको स्टोरेज, इनका स्टोरेज करना और असेंबली करना और टेस्टिंग करना और एडजस्टमेंट करना, ये सारी चीजें आपका रेस्क्यू रूम में होता है। ठीक है, अब रेस्क्यू रूम में आपका 15 सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस कम से कम अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, और रेस्क्यू रूम का किसके चार्ज में होता है? रेस्क्यू रूम इंचार्ज के अंडर में होता है। जो इसका मेन हेड होता है वो कौन होता है? रेस्क्यू रूम इंचार्ज होता है। ठीक है, जिसके अंडर में बहुत सारे रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन होते हैं, जितनी भी जरूरत होती है। ठीक है, और एक रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन रेस्क्यू रूम में हर वक्त अवेलेबल रहता है। हर वक्त रेस्क्यू रूम में हर वक्त एक रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन अवेलेबल रहना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ठीक, सो what is the use of the rescue room? Rescue room is basically used for the storage, assembly and testing and adjustment of the breeding apparatus and the other equipments which are used in the rescue operation. Okay, basically all the rescue rooms are provided with at least 15 self-contained breathing apparatus, and it is placed, rescue room is basically placed under the charge of a rescue room in charge, and under that in charge many other rescue trained persons are being provided, and at least one rescue trained person shall always remain in the rescue room. Okay, so that in case of an emergency, or we should attend the calls whichever requirement arises. Okay, in that case he is available always in the rescue room. Next, rescue room with refresher training and rescue room with refresher training facility. Okay, तो रेस्क्यू रूम रिफ्रेशर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी रेस्क्यू रूम रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होता है, ये बहुत सारी ग्रुप ऑफ माइंड्स के लिए होता है। मतलब अलग अलग ओनर्स मिलके क्या करते हैं कि भाई देखो, जैसे क्या होता है कि आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है। अब रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए आपने क्या किया, आपने बोला कि यार हर एक माइंस का ओनर अपने लिए अलग अलग सेटअप करने की जगह एक बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम सारे माइंस ओनर्स मिलके अपना एक रेस्क्यू रूम बना के रख लें। ठीक है, तो जिसमें कि हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आपका बोलता है कि आपका जितनी भी माइंस है, जितनी भी ग्रुप ऑफ माइंस है, वो सारी की सारी माइंस रेस्क्यू रूम से विद इन 35 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। ठीक है, एंड दूसरा आपका बोलता है कि अगर 5,000 से ज्यादा व्यक्ति हैं तो उस केस में आपको रेस्क्यू रूम रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है। ये जो रेस्क्यू रूम है ये किस तरीके से फंक्शन करता है? ये रेस्क्यू स्टेशन की तरह ही फंक्शन करता है ना। बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है कि आपका रेस्क्यू वर्क के लिए आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, इसमें 30 सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस होते हैं। ठीक है, एक ब्रिगेड होती है 5 रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्संस की, और इसको जो है तो एक इंचार्ज जो है तो ऑपरेट करता है। तो पहला चीज आपने क्या पढ़ा? रेस्क्यू रूम। ठीक है, आरआर। दूसरा आपने है, दूसरा चीज जो बनाया जाता है माइंस के ओनर्स के द्वारा, रेस्क्यू रूम एंड रिफ्रेशर training, triple RT, and the last one is rescue station. Okay, ये तीन चीज याद रखिएगा, रेस्क्यू रूम एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग फैसिलिटी, एंड द लास्ट वन इज रेस्क्यू स्टेशन। ओके,
तो यहाँ पे जो रेस्क्यू रूम रिफ्रेशर ट्रेनिंग फैसिलिटी जो खोला जा रहा है, ये बेसिकली बहुत सारे माइंस के ओनर्स जो है तो मिलके अपने लिए एक बना लेते हैं कि भाई रिफ्रेशर ट्रेनिंग हम इस प्रकार से यहाँ पर देंगे। अब इसके लिए जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है वो उसमें बोलता है कि आपका सारी की सारी माइंस 35 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए, है ना। और इन माइंस में अगर 5,000 से अधिक व्यक्ति हैं तो उस केस में भी आपको ट्रिपल आरटी बनाने की जरूरत है। ठीक है, एक तो 5,000 से कम व्यक्ति हैं तो रेस्क्यू रूम बनाएंगे, 5,000 से ज्यादा व्यक्ति है तो रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, इसमें जो है 30, उसमें क्या था, रेस्क्यू रूम में 15 सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस थे, यहाँ पर कितने हैं, 30 सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस है। इसी के साथ ही एक 5 रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन का ब्रिगेड भी बना के रखा जाता है, जिसको एक इंचार्ज जो है तो हेड करता है। ठीक है, अब आते हैं स्टॉपिंग्स पे। जब स्टॉपिंग्स की बात ही उठी है तो चलो इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपिंग्स? ओके, is this fine? Now I will tell you about the stoppings one by one, each and every stopping. Okay, now if we talk about the stoppings, first of all, the types of stoppings. Does anyone everyone understand about the stoppings? What is the stopping? Has everyone seen this, or I have to show it? So types of stopping. First of all, number one is the preparatory stopping. Preparatory stopping. Number two is the emergency stopping or temporary stopping. Emergency stopping or temporary stopping. And the third one is permanent stopping. Permanent stopping. These are the three basic types of stopping. यहाँ पे तीन बेसिक टाइप के स्टॉपिंग है आपका, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, इमरजेंसी स्टॉपिंग, टेम्पररी स्टॉपिंग या फिर परमानेंट स्टॉपिंग। ठीक है, तो ये तीन टाइप के स्टॉपिंग्स होते हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ किसकी, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग्स की, अगर मैं बात करूं किसकी, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग्स की, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी खास बात क्या होती है, बेसिकली इट इज पार्शियली मेड, ओके, इट इज मेड एट द एंट्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट and before and the timing for making it is before deploying. Okay, it is made before deploying, and after the deploying is completed in the panel, in a particular panel, in that particular panel, then the preparatory stopping is converted into isolation stopping. Okay, so you can write also partially made before, partially made before deploying and after that
converted into isolation stopping. ओके, उसके बाद आइसोलेशन स्टॉपिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है. एंड व्हाट इज इट्स लोकेशन? इट इज मेड एट द मेन एंट्रीज ऑफ द district. Okay, now the second one, isolation stopping. If we talk about the isolation stopping in degree 1 and degree 2 mines, this stopping is made basically degree 1, degree 2, degree 3 mines. Okay, but the thickness of this stopping varies. The thickness of this stopping varies according to the degree of गैसीनेस. अभी डिग्री 1, 2, 3 तीनों माइंस में बनाया जाता है गैसीनेस वाली माइंस में, लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है वो वैरी करती है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ गैसीनेस. अब यहाँ पे जो डिग्री 1 और डिग्री 2 माइंस है, ठीक है, थिकनेस ऑफ स्टॉपिंग अगर बात करूं, थिकनेस ऑफ स्टॉपिंग की बात करूं तो डिग्री 1 एंड 2 माइंस में इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर, 1 मीटर इसकी थिकनेस होती है. ठीक है, एंड बेसिकली डिग्री 2 और डिग्री 3 माइंस में इसके साथ क्या होगा, सॉरी डिग्री 3 माइंस में इसके क्या होता है, साथ क्या होता है? आइसोलेशन स्टॉपिंग स्टॉपिंग डिग्री 3 माइंस में क्या होता है? क्या आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाया जाता है? ठीक है, तो डिग्री 3 माइंस में आइसोलेशन स्टॉपिंग स्टार्टिंग में बनाया जाता है, बट बाय फाइनली इसको डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्टली एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग में कन्वर्ट कर देते हैं. एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग. तो बेसिकली टेक्निकली अगर कहा जाए तो डिग्री 3 माइंस में आइसोलेशन स्टॉपिंग्स नहीं बनाए जाते हैं. सो आपका यहां से एक क्वेश्चन भी बन जाता है, इन विच डिग्री ऑफ गैसीनेस, इन विच डिग्री ऑफ गैसीनेस isolation stopping is not made. Is not made. So answer is degree 3. Degree 3 mines. In degree 3 mines, isolation stopping is not made. Directly we used to make the explosion proof stopping. Okay, but in case of, so let's look in the case of degree 1 and degree 2. In case of degree 1 and degree 2, basically it is said that if percentage of methane is more than 2%, methane is more than 2%, then explosion proof stopping is made.
Understood, everyone? So isolation stopping. When isolation stopping is made, basically isolation stopping is made after the deploying is completed in the mines. Then in that case, isolation stopping is made. So if we are talk about the isolation stopping, it is made in the degree 1 and degree 2 mines, and the thickness of isolation stopping is 1 meter. But if the percentage of methane exceeds more than, or methane is more than 2%, then in that case isolation stopping is not made in the degree 1 and degree 2 mines, or if you have made the isolation stopping, then it will be converted into the explosion proof stopping directly. But if we talk about the degree 3 mines, isolation stopping is not being constructed in the degree 3 mines. Directly we used to construct the explosion proof stopping in degree 3 माइंस. ठीक है. अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग जो है तो आपका डिप्लरिंग के पहले बनाया जाता है, वो पार्शियली कंस्ट्रक्टेड होता है, उसको प्रिपरेटरी स्टॉपिंग कहा जाता है. जैसे ही आपका डिप्लरिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसे आइसोलेशन स्टॉपिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है. अब आइसोलेशन स्टॉपिंग का जो है तो आपका डिग्री 1 और डिग्री 2 माइंस में बनता है, जिसकी थिकनेस आपका 1 मीटर होता है, और इसके जो है तो बेसिकली ब्रिक मतलब ईटा एंड सीमेंट से बनाया जाता है, ब्रिक एंड सीमेंट वर्क से इसको बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ठीक है. अब अगर आपका बोलता है कि मीथेन का परसेंटेज 2% से अधिक है, तो उस केस में डिग्री 1 और डिग्री 2 माइंस में आप डायरेक्टली क्या बना देंगे, या जो आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग है तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग में कन्वर्ट कर देंगे. और डिग्री 3 माइंस में आइसोलेशन स्टॉपिंग नहीं बनाना है, वहां पे डायरेक्टली एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग आपको बना देना है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही. अब जब एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग की बात ही उठी है तो चलो इसके बारे में भी देख ही लेते हैं. एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग. Explosion proof stopping. What is special about the explosion proof stopping? Basically, two stoppings are made. In explosion proof stopping, two stoppings are made. Okay, the two stoppings are made, and the thickness of each stopping, each of thickness 1 meter. Okay, and the thickness of each stopping is 1 meter, and the distance between these two stoppings is distance between two stoppings distance between two stoppings, पंचायत देख लिए जी, stoppings is 4.5 meter. Okay, now what is, let's make the diagram. Suppose that this is your gallery. I will make 2-3 diagrams, and you are standing in this gallery. Okay, this is the front view. Now we talk about the top view. This is the top view.
Now we talk about the side view. Sorry. This is the side view, and you are standing here. Okay, so this is stopping number one and stopping number two. This is stopping number one and stopping number two, and you are standing here, somewhere over here. Consider any one, any stopping one or two, it doesn't matter. Okay. Now the distance between these two stoppings is 4.5 meter. Okay, and the gap which is present in this stopping is 4.5 meter, and this gap is filled with the incombustible material, and this type of stopping is known as explosion proof stopping. And the thickness of each stopping is 1 meter. Understood? Any doubt? बहुत ज्यादा है. अरे यार रूम में बैठ के देखना है, वेगा मूवीज में से डाउनलोड कर लो, देख लो. सॉरी यार, ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं, जंक्शन से कितना दूर होना चाहिए. पढ़ा भी होगा तो याद नहीं है, मैं देखना पड़ेगा एक बार. चलिए, तो ये आपका एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज अपन जो देखेंगे यहाँ पे, आइए इसको देखते हैं. So, what is the use of isolation stopping? Isolation stopping is used to seal off the goved out areas, goved out deploying area, or fire or spontaneous heating, or to isolate the disused working. So, what is the use of isolation stopping, or where the isolation stopping is being constructed? If this type of question arises, then you have to remember that it is this type of stopping is made in the goved out deploying area, or a fire or a spontaneous heating area, or to isolate the disused working. To isolate such kind of workings, isolation stopping is made. Okay, the stoppings, all the stoppings which are made in the mines, it shall be made of brick in lime or cement mortar, and the minimum thickness of the stoppings shall be as given below. Okay, now if we talk about the degree 3 gaseous mines, okay, the minimum thickness of the stopping in case of extraction, if you are doing the deploying by caving, then two stoppings are made, each of 1 meter thickness and 4.5 meter apart. Okay, that means explosion proof stopping shall be made in degree 3 mines if you are performing deploying by caving, or method of work is by caving. Okay, but if you are doing
with stowing, the method of work is with stowing, then in that case you have to construct only one stopping, and the thickness of that stopping should be at least 1 meter. Okay. Okay. Now, if we talk about degree 2 and degree 3 mines, sorry, degree 1 and degree 2 mines, then it is said that it shall be, if performed by caving method, the extraction method is caving, then in that case 1 meter, the thickness of the stopping must be 1 meter. Okay. And if the percentage of methane exceeds more than 2%, then it must be made a degree explosion proof stopping in degree 1 and degree 2 mines. And if you are doing a by extraction by stowing method, then in that case 0.5, द थिकनेस ऑफ द स्टॉपिंग मस्ट बी 0.5. अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि आपका डिग्री ऑफ गैसीनेस के बेसिस पे स्टॉपिंग्स का फॉर्मेशन की बात करता है, बेसिकली आइसोलेशन स्टॉपिंग. तो आइसोलेशन स्टॉपिंग की अगर मैं बात करूँ, ये किसके लिए है? ये पूरा का पूरा जो टेबल है ये आइसोलेशन स्टॉपिंग के लिए है, आइसोलेशन स्टॉपिंग के लिए है. ठीक है. तो यहाँ पे बोलता है कि डिग्री 3 माइनस है तो उसमें डायरेक्ट एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बना दीजिए. और अगर लेकिन अगर आप केविंग मेथड से कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन तो, लेकिन अगर आप कोल का एक्सट्रैक्शन स्टोइंग मेथड से कर रहे हैं तो उस केस में 1 मीटर की थिकनेस वाला स्टॉपिंग भी बना देते हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन होगा. लेकिन डिग्री 2 और डिग्री 3 माइनस में बोलता है कि 1 मीटर की थिकनेस वाला आइसोलेशन स्टॉपिंग आपको बनाना है, लेकिन अगर 2% से अधिक मीथेन पाया जाता है तो उस केस में आपको जो है तो क्या बनाना पड़ेगा? बाय केविंग अगर कर रहे हैं तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाना पड़ेगा, और विथ स्टोइंग अगर कर रहे हैं तो उस केस में 0.5 मीटर की थिकनेस वाला स्टॉपिंग बनाना पड़ेगा. इसमें आपका किसी प्रकार से मीथेन का परसेंटेज का काउंट नहीं किया जाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं लॉकिंग अरेंजमेंट की. ठीक है. ब्रिक हो चाहे आरसीसी स्टॉपिंग हो, ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं? रूफ में, फ्लोर में और साइड्स में लॉक करते हैं. लॉक इन द सेंस क्या होता है? जस्ट सपोज दैट कि ये जो इतनी बड़ी स्क्रीन दिख रही है ना, ये आपकी स्टॉपिंग है, ये आपका स्टॉपिंग है. ये इतनी बड़ी जो स्क्रीन दिख रही है ये आपका स्टॉपिंग है. जस्ट सपोज दैट. ठीक है. और इसके ऊपर रूफ, इसके नीचे फ्लोर, इसके इधर कोल पिलर, इसके इधर भी कोल पिलर, दोनों तरफ कोल पिलर्स है. ठीक है. ठीक है. अब इसमें जो यहां से यहां तक आपका जो देख रहे हो, ठीक है, यहीं तक का हिस्सा दिखेगा, लेकिन आपका स्टॉपिंग रियलिटी में इतना ही नहीं होता है, ये और आगे तक दीवाल में धंसा होता है. दीवाल में खंजा काटते हैं. ठीक है. वो खंजा काट के इसको और अंदर तक बनाकर लॉक किया जाता है. इसी प्रकार से जैसे यहां तक का दिख रहा है आपको, तो ये सिर्फ इतना तक का नहीं है, ये जमीन के अंदर और गड्ढा खोद के, जैसे नींव वगैरह खोदी जाती है, फाउंडेशन एज फाउंडेशंस आर कट इन द हम इससे परेशान हैं. ले भाई. तो जैसे एज फाउंडेशन इज कट बिफोर मेकिंग द हाउस, सिमिलर टू दैट ओनली अ ट्रेंच इज कट बिलो द सरफेस. ओके. बिलो द फ्लोर, ट्रेंच इज कट अबाउट द रूफ, ट्रेंच इज कट after the sides in the coal pillars. Okay. From that trenches only the stopping is being constructed. So what must be the minimum depth of the locking? Okay. What must be the, and these trenches are called the locking arrangements of the stopping. So what must be the minimum depth of the roof? Then in case of, it is said that if the roof and floor is
coal. Basically that is coal is found in the roof and as well as in the floor also. Then if you are making a brick in cement or lime mortar stopping, then the depth must be at least 1 meter. And if you are making a RCC stopping, then the depth must be at least 50 centimeter. If the roof and floor contains shale, then in that case the depth must be at least 30 centimeter for brick in lime and lime mortar, brick in cement and lime mortar. And in case of RCC it must be at least 30 centimeter. Okay. Okay, this must be at least 30 centimeter. If the roof contains sandstone and sandstone, then in the roof and floor, then in that case 15 centimeter and 15 centimeter in both the cases. Okay, so you have to require. Okay, all done. Now, what are the fittings which are given in the stoppings? So, if we talk about the fitting arrangement of the stoppings, before that, I should tell some of the important things related to our stopping that would be helpful for you to understand. First of all, we have to type complete all the types of stopping. Now, we have to see the बड़ा दिक्कत है यार. Now, here we will see basically the next stopping is the temporary stopping or emergency stopping. Temporary stopping or अरे or emergency stopping. Temporary or emergency stopping. Basically, it is also known as sandbag stopping. Sandbag stopping. Sandbag stopping. It is made with gypsum. It is also known as gypsum stopping because quick setting gypsum is also used for its construction. And the thickness of this stopping is 2 meter. Okay. And if the height of the roadway is more than 3 meter, then its thickness will be 2.5 meter. Okay, it depends on the height of the roadway. As the height of the roadway increases, then the thickness of the stopping will also increase. If the height of the roadway is 3 meter, then its thickness will be 2 meter. And if the height of the roadway is to 3.5 meter, then its thickness will be 3.5 meter. Okay, so above 3 meter, as the height of the roadway increases, then the height thickness of the stopping will also be will be increased. Okay, now if we talk about the next stopping is the permanent stopping or fire stopping. Okay, so its thickness
up to 3 meter, up to 3 meter height, (2 meter), beyond 3 meter, thickness will increase with height. Okay. Next, permanent stopping or fire stopping. Permanent stopping or fire stopping. Made after made after 24 hours. Made after 24 hours after making temporary stopping. So what do you mean by temporary stopping? Why the temporary stopping is made first, then after that the fire stopping or permanent stopping is made? Because temporary stopping is such an stopping, or it is a type of emergency stopping. If suppose that in any district, if there is explosion or the occurrence of the fire, then in that case preparatory temporary stopping or the emergency stopping is made by using the sandbags or the cement or whatever material is present, or the bags are filled with the mud or the soil, or they are filled with the soil. These sandbags are filled with the soil also, and they are stacked one above the other, like this, all over the gallery, like this. In this manner, we used to try to cut off the supply of oxygen reaching to the point of fire or explosion. This will help out to just cut off the oxygen and minimize the chances of explosion or catching fire, or the extension of the fire, okay, or the extension of the explosion. We are trying to minimize it, okay. And for the next 24 hours we will see if there is any type of explosion or not. If everything is fine, or we can say if everything is under control, then in that case the permanent stopping or the fire stopping is being constructed after 24 hours, okay. This stopping, the manner in which this stopping is made, like this. If you will see the side view, it is made like this. This is your roof and this is your floor, and I am giving you the side view. This is the side view. As you are standing here in front of the stopping, just imagine you are standing in front of the stopping like this, and the height of the roadway, just suppose that
the height of the roadway is 7 meter height. Okay, the height of the roadway is 7 meter. So near the roof, the thickness of the stopping is 1 meter. Near the roof, the thickness of the stopping is 1 meter. Okay, just remember this thing. Near the roof, the thickness of the stopping is 1 meter. And after every 3 meter, and after every 3 meter, suppose that up to 3 meter, the thickness of the stopping approximately 1 meter. Okay, and after 3 meter, the thickness will of the stopping will increase by 0.15 meters. Okay, or we can say I can say that 15 centimeter thickness will be increased after at 3 meter height. Okay, so now the height width of the or the thickness of the stopping will be 1.15 meter. Now up to 3 meter, next 3 meter, the thickness will be of the stopping will be nearly 1.15 meter. After that, again after 3 meters, the thickness of the stopping will again increase, and it will be 1.3 meter. Okay, so after every 3 meters, the thickness of the stopping will get increased automatically. So these were the different types of stoppings as we have studied over here. Now, if I will talk about the fittings, let's talk about the fittings. Fittings in fire stopping. If we talk about the fittings in fire stopping, okay, it will be completed soon. Okay, don't worry. The number one fitting is the water gauge. Water gauge. Number two fitting, thermometer. Number three fitting, sampling pipe. Sampling pipe. Number four, water seal. Water seal. Number five, number plate. Number plate. Number six, signature plate. If we talk about the sampling pipe, its dia is its dia is 18 mm. Okay, its dia is 18 mm, and extended up to 3 meters 3 meter on the fire side. ठीक है, जिधर साइड भी आग लगी रहती है उधर साइड ये जो सैंपलिंग पाइप होता है ये
आपका 3 मीटर तक आगे तक जाता है. जस्ट सपोज दैट दिस इज योर गैलरी, this is your stopping. On this side आग is lagging and on this side you are standing. Okay, you have inserted a sampling pipe. This is your sampling pipe for taking the samples. Okay, and this sampling pipe will be extended up to 3 meters. 3 meters on the fire side. Okay, up to 3 meters on the fire side it will be extended. This is the fire stopping in a thick seam. As you can see, there is a platform for taking the readings in the thermometer. This is your thermometer. Okay, this is your signature plate, and this is the sampling pipe placed over here. With this ladder, you can go to the next platform, then to the next platform, then to the next platform. Okay, like this you can go to the platforms. You can situate your platforms, and with the help of ladders you can go up there. Okay, and there is a number plate that is in which the number of the stopping is written, that which number stopping is it, and it is provided with the sampling pipe. If we talk about the sampling pipe, this sampling pipe is like this. Towards the fire area, its length is approximately 3 meter. Okay, and this is your fire side. Okay, after that this is your water seal. In the water seal is the such type of arrangement is made that if a such case arises that the pressure behind the stopping, what is the use of the water gauge? The use of the water gauge is that water seal is that if the pressure behind the stopping increases, or any type of pressure is created due to water, seepage of water or anything else, then in that case all these things or the excess gas should not create pressure on the walls of the stopping. It should not create excess pressure on the walls of a stopping. Instead of that, it should come from here and get out of the from the this side to from the back side to the front side in the main stream of the airway. Okay, this will protects your stopping from being broken or from being bursted out due to high pressure created behind the stopping. It reduces it basically prevents the high pressure being created behind the stopping with due to any type of reason. Okay, have you understood this thing? Now, as you have to take sample behind the stoppings. Okay, now after sealing the fire areas, just listen carefully. I will tell each and everything. You have to just listen now. Okay, after sealing the fire area, basically the workers are being withdrawn. Just you have suppose that you have sealed the fire area. After that, you will withdraw all your workers from that point. Okay, because after sealing we have to wait for 24 hours to 48 hours, so because there is a chance of gas explosion due to there is a chance of gas explosion. Okay, after 48 hours the samples are being taken from behind the stopping. Okay, with the help of the sampling pipe, and it is being analyzed on the surface. In degree 3 mines it is converted into explosion proof stopping. Directly explosion proof stopping is made. Sample collection interval. Now how you will take sample? Okay, from behind the stoppings. So as you all know, the first sample has been taken after 48 hours. Okay, after sealing of the stopping. Okay, after 48 hours you have to take the samples after at an interval of 8 hours, every 8 hours. Okay, just suppose that, leave it. So what I have said, for the next, after sealing the fire stopping, for the next 48 hours, you don't have to go near that stopping.
Okay, if the explosion does not occur, then you will go and take the sample, and you will and from now onwards you will take sample on regular basis at an interval of every 8 hours. You will continue to take these type of samples at an interval of 8 hours until and unless the percentage of oxygen falls 10%, falls to 10% or below that. Okay, and the percentage of methane rises up to 16%. Okay, if such condition arises, okay, then in that case, now you don't have to take the samples after intervals of 8 hours. You can just relax yourself, and now you can collect the samples. You have to collect the samples after an interval of every 24 hours. Okay, and up to what time period you have to till what time, now till what time you have to collect the samples after the intervals of every 24 hours, till the percentage of oxygen falls below 5% and the percentage of methane is more than 30%. If such condition arises, then in that case you have to take the samples after or after every 48 hours, or you can take the samples at a longer period also, as your wish. Okay, have you understood this thing? देखिए अब आप बात करते हैं हम यहाँ पर किससे, हमने यहाँ से ये देखिए ये आपका क्या था, ये पूरा का पूरा आपका स्टॉपिंग था। ठीक है, ये देखिए ये आपका एक्स्ट्रा जो पोर्शन दिया हुआ है ना, ये आपका लॉकिंग अरेंजमेंट था। अब स्टॉपिंग में आपका प्लेटफॉर्म बनाया, चूंकि स्टॉपिंग की यहाँ पे थिकनेस ज्यादा बोला है कि थिक सीम है, तो उस केस में स्टॉपिंग की ऊंचाई ज्यादा है मेरी, तो प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाए, लैडर्स लगाए ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। इसमें सिग्नेचर प्लेट है जिसमें कि हर 3 महीने में एक बार जो है तो सिग्नेचर मिटाया जाता है। ठीक है, 3 महीने से ज्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, या 3 महीने के पहले किसी भी रिकॉर्ड को मिटाया नहीं जाता। इसमें यहाँ पर थर्मामीटर में रीडिंग ले सकते हैं, सैम्पलिंग पाइप लगा रहता है। सैम्पलिंग पाइप की अगर बात करें तो सैम्पलिंग पाइप जिधर भी आग लगी रहती है उधर 3 मीटर तक एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, वाटर सील लगा होता है, जो कि कितना भी प्रेशर आए फायर साइड से, ये मान लीजिए गैस का प्रेशर बन रहा है, किसी भी चीज का प्रेशर बन रहा है, तो अगर अधिक प्रेशर हुआ तो यहाँ से वो गैस निकल जाएगी बिना आपके स्टॉपिंग को तोड़े, गैस यहाँ से निकल जाती है। अब अगली चीज मैंने बोला कि भाई आपका ये जो स्टॉपिंग होता है, ठीक है, इसके पीछे का सैंपलिंग कब कब लिया जाता है, तो फायर एरिया को जैसे ही सील किया जाता है उसके बाद सारे वर्कर्स को आप वहां से विड्रॉ कर लेंगे, और अगले 24 से 48 घंटों तक किसी भी प्रकार का आपको वहां पर नहीं जाना है, क्योंकि एक्सप्लोजन होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे ही 48 घंटे खत्म होते हैं तो आप क्या करेंगे, वहां पर जाके सैंपल कलेक्ट करेंगे स्टॉपिंग के पीछे से। ठीक है, मतलब यहाँ से खड़े होकर स्टॉपिंग के पीछे का सैंपल आप कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब सैंपल कलेक्शन की जब बात आती है तो ये कितने कितने समय में करेंगे, तो जैसे ही आप 48 घंटे के बाद सैंपल कलेक्ट करने गए, ठीक है, अब आप हर 8 घंटे में सैंपल लगातार रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करेंगे। अब यह काम कब तक करेंगे, जब तक आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज गिरते गिरते 10% से नीचे ना आ जाए और मीथेन का परसेंटेज बढ़ते बढ़ते 16% से अधिक न चला जाए। जैसे ही ये चीज होता है तो अब आप हर 24 घंटे में जो है तो सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यह कब तक करना है, जब तक कि आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज गिरते गिरते 5% से कम ना हो जाए और मीथेन का परसेंटेज बढ़ते बढ़ते 30% से अधिक ना हो जाए, तब तक यह काम करना। और जैसे ही यह हो जाता है तो आप हर 48 घंटे या जितना लंबे समय में चाहते हैं उतने लंबे समय में आप क्या कर सकते हैं, आप सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरी कहानी आपकी स्टॉपिंग की। तो स्टॉपिंग से रिलेटेड ये चीज तो आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर एवरीवन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? U shaped, what is U shaped, this pipe? This is only the U pipe. It is filled with water, like the
defecation arrangement is made in your homes, okay, in the latrines or sanitary sheets. In the sanitary sheets, the such type of arrangement is made, okay. So that why such type of arrangement is made? Because the reason is, it has a reason. What is the reason behind it? The sheets which are used in your houses or which you use daily has such kind of arrangement. What is the reason behind it? So that, suppose that, mm, अरे यार वो बनाने की जरूरत है. Suppose that if I will not fill water over here, if I will not fill water over here, then in that case, or I will not keep it in U shape, then in that case what will happen? Suppose that this type of arrangement I have made. Suppose that this type of arrangement as I have made, then what will happen in that case? It the gases will continuously come out of the, will continuously come out of the, come out of the stopping behind, from behind the stopping. This will, yes, Naresh, this is right. First 3 meter near the roof, near the roof, first 3 meter will be, the thickness will be 1 meter. After that, the next 3 meter, the thickness will be 1.15 meter. Okay. After that, the next 3 meter thickness will be 1.3 meter. It depends. After every 3 meter, there will be increase of 15 centimeter. Okay. There will be increase of 15 centimeter after every 3 meter. बिकॉज ये एक प्रकार का फायर स्टॉपिंग है. देखिए, अगर मैं बात करूं, देखिए क्या होता है, अगर मैं बात करूं डिग्री 3 माइनस की, डिग्री 3 माइनस की, तो डिग्री 3 माइनस में क्या होता है? जस्ट हियर लिसन केयरफुली. इन डिग्री 3 माइनस वी हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड द एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग. देयर इज नो अदर ऑप्शन for the preparatory or the temporary or the emergency or the isolation, it doesn't matter. If it is degree 3 minus, then in that case you will construct the or explosion proof stopping. It is compulsory over there. But in degree 1 and degree 2 minus, why you will create such type of chaos of creating explosion proof stopping if it is not required over there? But if it is not possible, it is very it has very less chances in the degree 1 and the degree 2 mines of the occurrence of any type of fire or explosion. But if it arises, such condition arises, then in that case you haven't constructed the explosion proof stopping in the degree 1 and degree 2 mines. Then what you will do in that case? You will just, whatever you are getting in the in your surrounding, you will just make the a temporary stopping or the emergency stopping. After that, okay, first of all you will make the temporary stopping with the help of the sandbags or whatever you are getting over the place, over that place, okay, near about that place. But after that, you don't have time to make a explosion proof stopping. It will take much more time than the than making of the permanent of the or the fire stopping. That's why it this type of stopping is made. It is easy to make, and it is less time taking, plus it is much more efficient than the other types of stopping. Not much more efficient than the explosion proof stopping, because explosion proof stopping can resist the explosion. Just understand the difference between the explosion proof the stopping and the fire stopping. As the name suggests, this is a fire stopping. Okay. In fire stopping,
the area behind the stopping is has catched fire or the fire has occurred. But in explosion proof stopping, it does not have to resist any type of high force or any type of force which occurs due to the explosion. But in case of explosion proof stopping, it has to resist the explosion. Okay, that's why we are making the explosion proof stopping. So fire stopping is made basically to reduce the leakages. First of all, to reduce the leakages as well as leakage of the oxygen or any other gases. Okay, that's why fire stopping is made, and its thickness is increased so that it can bear any type of small explosions or any other thing, and there should not be any type of leakage of methane from this side. Okay, that's why this type of stopping is made, and explosion proof stopping is made after the for taking care of the so that any type of explosion can be resisted. Now the next topic, miscellaneous topic, is dust and air crossings. Okay, so wait for 5 minutes. I should drink some water. Not 5 minutes, 1 minute only. So, regulation number 143, dust. As you have already studied, possibilities are there. You have already studied these things. And the dust, basically, we have to take precautions again from the respirable dust for protection from respirable dust. Okay, and as you can see over here, it is the duty of owner, agent, and manager to minimize the dust emission, suppress airborne dust. But the basic thing which is important for you, as you have already this thing, just I will make you revise such things, that about the definitions, that the types of the dust. The first is the inhalable dust. It is the fraction of the airborne dust. Now airborne dust, there are three types of dust in the market. Three types of dust in the market. First of all, the airborne dust, the second is the inhalable dust, and the third is the respirable dust. The the size of the airborne dust is zero point 0.1 micrometers or more than the zero point 0.1 micrometers. Now if we talk about the size of the inhalable dust, the size of the inhalable dust is much more smaller than the respirable airborne dust, and it basically enters the nose and mouth during breathing, but it gets deposited on the respiratory tract. Okay, over in the trachea region. And the respirable dust is much more dangerous than the inhalable dust, because it is much more smaller than the inhalable dust. Its size ranges from 0.1 to 10 micrometers, and it penetrates the gaseous exchange regions in the lungs. That is, it crosses the alveoli, it reaches to your blood. It is so small that it reaches to your blood also. Okay, so you have to remember this thing, and all the other things are you already knew about the CMR 2017. So I don't think I have to tell each and everything over here. Okay. So what do you mean by splitting and coursing? What do you mean by splitting and coursing? Does anyone knows about this splitting? What is the basic difference between this and coursing? What is the basic difference between this splitting and coursing? Splitting means dividing. Dividing
mean current of air, current of air, mean current of air into various districts. ओके, जो एयर की मेन करंट होती है उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या कहलाता है, आपका स्प्लिटिंग कहलाता है. ओके, नाउ coursing means giving direction to the air current, giving direction to the air current. Okay, for that purpose what is used by you? Bratish cloth and the ducts can also be used for this purpose. Okay, in an underground coal mine, and corrugated sheet partition, PVC, auxiliary fan with tube, all these things can be used for the coursing purposes. Okay, now the next is, what do you mean by breathing of stopping? Breathing of stopping. Breathing of stopping. आपका स्टॉपिंग सांस ले रहा है, दैट मीन्स ही इज अलाइव. योर स्टॉपिंग इज ब्रीदिंग, दैट मीन्स इट इज अलाइव. स्टॉपिंग इज अलाइव or not? What do you mean by breathing of stopping? Breathing of stopping means leakage of air, leakage of oxygen, okay, into the sealed area, into fire area. Okay, breathing of stopping means leakage of oxygen into fire area. This is called breathing of stopping. What do you mean by door? Ventilation door. Ventilation door. Suppose that this is your mines, this is your intake, and this is your return. Okay, and they are connected somewhere over here, somewhere over here. Okay, if you are entering from here, then in that case you have to, if you are sorry, if you have to basically do any type of sampling or any type of inspection in the return airway, and you are entering from the intake airway, now you have to do the sampling at this point A. Just suppose that at this point A you have to do the sampling or the inspection. Now for going to this point, as you have to cover this much distance, and but this covering this much distance is a worthless thing, or it is the wastage of time. So to save our time, we just, what we do, we make a connection between the intake and the return airway, okay, with the help of a passage. But this passage is not open, because this will create the leakage of the air. So to stop the leakage of the air, what we have done here, we have used the doors, the normal doors which are used in our houses. Such type of doors are used over here, but their direction of opening is always in opposite direction. Okay, like
This is the intake air. This will create pressure in this direction, so our ventilation door, our door will open in this direction like this. Okay, it will open like this. After that, the other door is will open like this. Okay, and after that, this door will open like this in the opposite direction, like this. Since the air comes from this direction, and then this air comes from this direction. Okay, in this manner ventilation doors are constructed. Okay, now the next thing, ventilation door is over. Now air crossing, as demanded by the Naresh Kumar. What is air crossing? Basically, sometimes it happens that you, when you are constructed such a making such a big mine, or when you are planning or doing the development of a big mine, then in that case, sometimes it happens that the intake or the return airway of any district or of any part of the mine has to be crossed from one point only, or from one gallery only. Then in that case you cannot make cross them from one another. Okay, this will create a leakage of the air or mixing of the air. So in that case, where you have to make the crossing point of the intake and the return airway from one junction or from one gallery only, then in that case what you do, you make an air crossing. Okay, basically. So it is said that when a return airway crosses an intake airway, an air crossing is built. If one airway is deflected over the other, the crossing is called the overcast. And if it is deflected under the other, it is called the undercast. Okay. So air crossing is of two types. Air crossing. Now, as you can see over here, I will make the diagram. This is your intake. Okay. This is your return. This is overcast. Cast. Another one. This is your undercast. अरे यार, अंडरकास्ट का डायग्राम नहीं पता, सॉरी, इसका डायग्राम नहीं है मेरे पास. अंडरकास्ट में
ठीक है। देखिए अंडर कास्ट में क्या होता है, जैसे ये आपकी गैलरी हो गई, ठीक है। अब इस गैलरी में आप जो है सीधे सीधे जा रहे हैं, ठीक है। इस गैलरी में आप सीधे सीधे जा रहे हैं, ठीक। अब आपको क्या कराना है, गैलरी के इस साइड से इस साइड मुझे जो है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। या तो गैलरी में इधर जाएंगे आप या तो उधर जाएंगे, जस्ट सपोज दैट, ठीक है। अब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है तो इनटेक और रिटर्न एयरवे बनाना है, ठीक है। अब इसके लिए आपने क्या किया, आपने जो है तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया, लाइक दिस। ये अरेंजमेंट आप करके क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपका हो सकता है पिलर हो, ठीक है। ये जस्ट सपोज दैट कोयले का पिलर है आपका, ठीक है, ठीक है। ये आपका कोल का पिलर हो गया। अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नीचे जा सकते हैं, लेकिन आप या तो इस डायरेक्शन में जाएंगे या तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। और ये जो बंदा ऊपर खड़ा है ना, गैलरी में जो बंदा खड़ा है, इस केस में ये बंदा या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, ठीक है। सेम यही केस यहाँ पर भी है कि आपका यहाँ पे जो इनटेक साइड में बंदा खड़ा है वो या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, और आपका जो रिटर्न एयरवे है उसमें कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है तो वो या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इमेजिन हो पा रहा है ये चीज। अब देखिए, अब आपका इस प्रकार से अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट क्या बनाया जाता है, एयर क्रॉसिंग बनाया जाता है, ठीक है। अंडरकास्ट या फिर ओवरकास्ट स्टॉपिंग बनाया जाता है। अब इस स्टॉपिंग की खास बात क्या होती है, ठीक है। सॉरी 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 स्टॉपिंग बोल रहा हूं, सॉरी, एयर क्रॉसिंग, ठीक है। अंडरकास्ट या ओवरकास्ट एयर क्रॉसिंग बनाया जाता है। सो वुड यू लाइक टू टेल मी, प्लीज टेल मी, व्हाई द रिटर्न एयरवे इज kept over here above the intake airway, first of all, or which type of air crossing is the best air crossing which has to be made, and it is much more efficient, which type of stopping air crossing is much more efficient, okay, undercast or overcast. So over here, the overcast stopping is much more successful because it contains the return, it is the basically it contains all the return air, all the exhaust gases, okay. Basically it has the return airway over the intake airway, and in case of return airway there is the temperature of the air is much more than the intake airway, okay. And it contains methane also. If methane gas is present, then that methane gas uh, will rush towards the roof only, and if it rush towards the roof, then it will be easily, we can easily take it out of from the return airway. As well as the gases are hot, all the gases of the return airway are very hot, in due to that reason also all the gases will rise towards the roof. So it will be convenient to take those gases or the exhaust gases from the return airway if we are keeping the return airway above the intake airway. But in case of undercast stopping, there are some difficulties. That is, water may fill over here. Due to the filling of the water, this will behave like a I don't know, क्या बोलते थे उसको यार, क्या बोलते हैं, कुछ तो था वो, water seal. It will behave like a water seal, and no one can go over there for the inspection purposes also, and it will be difficult to make the return exhaust gases to return to go out of the return airway, okay. So it is not preferred much over here. Now if we talk about the thickness of stoppings, sorry, air crossing, so let's move to the next thing. चलिए एयर क्रॉसिंग्स के बारे में देखते हैं।
हाँ, तो अगर मैं इसके एयर क्रॉसिंग के किसकी बात करूं, ना मेरा वो डाटा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया, इसलिए थोड़ा इसमें से पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें आपका बोलता है कि एयर क्रॉसिंग्स को जो है तो आपका इसका जो थिकनेस होना चाहिए, जो फॉल्स रूफ अपन बनाते हैं एयर क्रॉसिंग में, ये जो आपका होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका फॉल्स रूफ कहलाता है, फॉल्स रूफ कहलाता है। और ये जो फॉल्स रूफ हम बना रहे हैं, इसकी जो इसमें जो गिर्डर्स यूज होते हैं, इसके गिर्डर्स के कितने के यूज होते हैं, इसमें जो गिर्डर्स यूज होते हैं, क्या गाटर गिर्डर्स, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, उन गिर्डर्स का कितना होता है, 15 सेंटीमीटर इनकी जो है तो थिकनेस होती है ना, और 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है, ठीक है, एंड वायर्स होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मतलब 15/8 का क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। और इसकी लंबाई तो जितना आपको एयर क्रॉसिंग बनाना हो उतना लंबाई इसकी अपन रखेंगे। इट्स लेंथ विल बी इक्वल टू द गैलरी, ओके। Its cross sectional area is 15 centimeter into 18 centimeter, and the thickness of the walls of the lower airway, okay, the thickness of the walls, this walls, okay, the thickness of these walls is 75 centimeter, 75 centimeter, the thickness of this walls is 75 centimeter. And the area of cross sectional, the area of cross section, that is this complete area of the cross section shall not be less than 9.3 meter square. Area of cross section of each airway shall not be less than 9.3 meter square, okay. It shall not be less than 9.3 meter square. Okay, now the thickness of the false roof, thickness of walls, thickness, तो वॉल्स की जो थिकनेस होती है, वॉल्स की थिकनेस होती है 75 सेंटीमीटर, एंड जो फॉल्स रूफ है उसकी थिकनेस होती है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से थिकनेस होती है। इसका ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट not steeper than 1/3, 1/3 से अधिक स्टीपर नहीं होना चाहिए इसका ग्रेडियंट, ठीक है। और इसका इंस्पेक्शन कितने दिन में किया जाता है, इंस्पेक्शन की अगर मैं बात करूं, 14 डेज में, एवरी 14 डेज में इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, या तो ओवरमैन के द्वारा, या असिस्टेंट मैनेजर, या फिर अंडर मैनेजर, इनके द्वारा किया जाता है। Who used to do the inspection of this air crossings?
in every 40, the inspection of these air crossings is done in every 14 days by the overman, assistant manager or under manager, and the area of cross section of each airway shall not be less than 9.3 meters square. The thickness of the walls is 75 centimeter, and that of the false roof, the thickness of the false roof is 30 centimeter. Okay, the gradient over here, it must not be steeper than 1 in 3, and this place is filled with the incombustible material over here. Okay, in such manner stoppings are made. Now the next thing, regulator. What is the use of regulator? What is regulator? it is a it is a stopping it is a stopping with a window, with a window. Okay, when a stopping has a window in it, or there is a small opening in the stopping, then it is known as regulator. That stopping is known as regulator because it is made to to mm, to restrict the air quantity air quantity. Okay, so it is made to restrict the air quantity. Suppose that, as you can see over here, that this is a stopping. Okay, in this stopping there is a window or opening over there, and this window has some sort of arrangement like the sliding window, as you have seen, maybe you have seen, or some of you would be having in your houses, that the sliding window is there. If you open this like this, then it will open like this. Then if you want to close, then, or you can slide one side, or you can slide this one. Okay, in this manner you can control the flow of the air, just air flowing from this side to that side, and you can control this by sliding this shutters. Okay, sliding this shutters. By sliding these shutters or the windows, you can control the flow of the air. Basically, regulator is made for the distant districts. Suppose that if there is a district which is just beside the shaft, then that district or that panel will get large quantity of air, but the district or the panel which is present at a longer distance or at a much more distance than from the shaft, so that it will get the less quantity of air. To regulate that only, or to restrict the quantity of air reaching to the district or the panel which is present besides the shaft or near the shaft, we use regulators. It will restrict the quantity of air flowing into that panel, and it will help to improve the ventilation of the farthest panel. Okay, in this manner regulator basically works, and this is the use of regulator. So it is made in the written airway of districts, airway of district, whose air has to be regulated.
whose air has to be regulated. Clear? Anything else? If we talk about its inspection in every 14 days. Okay, in every 14 days its inspection is being done by a competent person. चलिए ठीक है, तो यहां तक आपका रेगुलेटर हो गया। अब देखिए, अब आपका इसके अलावा और कुछ खास बचता नहीं है ना, और ना ही है। हम जब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो उस समय देखिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपका वेंटिलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है जो भी है। अब बचा कुचा रेगुलेशन वगैरह वो आपको सीएमआर में मिल जाएगा, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां से भी आप चीजों को कवर अप करिए। तो वेंटिलेशन का इतना ही पोर्शन था, ठीक है। तो यहाँ से वेंटिलेशन खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ वर्क, और बाकी की जो डिमांड्स है आपकी उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। नोट्स की जहां तक बात है, तो नोट्स मैंने आपका जो है तो प्रिपेयर आज शाम तक हो जाएगा, उसको शॉर्ट में प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसको जो है तो मैं इवनिंग तक में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.